of NMR spectroscopy. In this specific session, we are going to learn principles of NMR spectroscopy. Now, what is mean by the principle which is involving in NMR spectroscopy? See, whatever the principle is there, that principle is very easier one. And when you listen or when you have this principle at that time, you will reveal that simply whatever this principle is there, this on this principle your spectroscopy is working. Actually, each and every spectroscopy is working on a specific principle, and whatever that principle is there, that principle is very very important to take place this any spectroscopy, to take place any spectroscopy. Now, whatever this NMR spectroscopy is there, to explain this NMR spectroscopy, as I was explaining you, first of all, I'll use whiteboard and I'll explain, and then after I'll load some slides to explain you. So as we have one NMR active as we have one active NMR nuclei, and this NMR active nuclei is moving. Now you may ask me, ma'am, what is mean by Thamba? Ma'am, what is mean by this yellow color rotation, and what is mean by this green headed arrow? Now, this green headed arrow means the axis with which your nuclei is moving, the axis with which imaginary axis with which your nuclei is moving. And now, whatever this axis is there, with this axis, your nuclei is moving again and again. Now, you have to do one thing before going to learn anything. And what do you have to do? आप आपके हाथ में अगर से कड़ा हो, बैंगल हो, या फिर आपके घर में बॉयज लोग वो भवरा मराठीत म्हणतात बघा, तो जो फरशीवरती टाकून खेळतात, हिंदीत वगैरे त्याला काय म्हणतात मला आता आठवत नाहीये, बट व्हॉट एव्हर दिस थिंग्स आर देयर, these things you try to learn out. What is why I'm telling you these things, और मैं आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी. ओके, तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस दिस कड़ा या फिर बैंगल or whatever that your bora in Marathi, and why I'm telling you to try to move them and to observe their motion, to observe their rotation or motion. See, whenever you are here with any nuclei, at that time nuclei is moving, and that nuclei may be moved towards clockwise or anti-clockwise, and it is whole about its spin, and here that spin value is equals to half. That might be positive or that might be negative. Here we are not dealing with its spin and how it is orienting and all, but here we are orienting, or sorry, here we are dealing with the only spinning of that nucleus generator, only spinning of that nucleus generator. What do I mean? I mean to say, ये जो कुछ भी आपका न्यूक्लिया है, ये न्यूक्लिया जब मूव होता है, तब वो मूव होते हुए कैसे मूव होगा? खुद की तरफ, मतलब कि वो जब मूव होता है तब मूव होते हुए क्या होगा कि ये न्यूक्लियाई मूव होता है, एंड मूव होते हुए खुद तो पहले राउंड 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 मूव होता है, बट एज सुन एज, या फिर आप जैसे ही, मतलब कि वो जो कुछ भी आपका न्यूक्लियाई है, वो न्यूक्लियाई आफ्टर सम टाइम it is lowering its motion. मतलब क्या? Now it can have precession. Precession means what? Precession is nothing but the motion. Precession is nothing but the motion. What is that motion? It is nothing but the motion of your nuclei, which is, एक मिनट, हाँ आपको इस डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ. Precession is nothing but the motion. Precession is nothing but the motion of your
nuclei which is around or which is towards a vertical axis, and whatever this vertical axis which is of your earth's gravitational force, मतलब कि आपके गायरोमैग्नेटिक मोशन जो कुछ भी होती है, अब ये अर्थ की जो कुछ भी मोशन होती है उस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को, जो कुछ भी उसके वर्टिकल फील्ड को वो मूव होता है, उसे हम बोलते हैं प्रिसेशनल मोशन. व्हाट डू आई मीन बाय प्रिसेशनल मोशन या फिर प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी? प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज अनदर थिंग. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिसेशनल मोशन मतलब क्या. प्रिसेशनल मोशन is at the top level, is at the top level of your nucleus. मतलब जब कभी भी आपका एनी न्यूक्लियर इज स्टार्टिंग टू स्पिनिंग, स्टार्ट करते हुए आपको कड़े का एक्सपेरिमेंट करना है या फिर बैंगल लेनी है और उसको फर्श पर गोल गोल घुमाना है, जैसे कि हम बचपन में करते थे ना, वो ऐसा कड़ा या फिर बैंगल निकाल के उसको घुमा के देखते थे. क्या होता है, पहले तो आपका बैंगल बहुत ही राउंड 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 शेप में सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है, घूमते रहता है. बट कुछ देर के बाद में वो जो आपका कड़ा या बैंगल होती है, it is starting to change its motion, and that motion is nothing but the precessional frequency. या फिर आप उसको बोल सकते हो कि वो जो कुछ भी कड़े की स्लो 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 फ्रीक्वेंसी होती है, अब ये जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी होती है या फिर ये जो कुछ भी प्रिसेशन होता है, ये प्रिसेशन मतलब कि आपके अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फील्ड, उसके एक्सिस के साथ में आपका ये जो स्पिन हो रहा है न्यूक्लियर, उसकी स्पिनिंग, इस को हम बोलते हैं प्रिसेशनल मोशन. क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रिसेशनल मोशन. व्हाट इज मीन इन दिस क्लास, व्हाट वी लर्न, और I think is it necessary to repeat the definition or to repeat the what is mean by precessional motion? Precessional motion is the motion. What is mean by this motion? Precessional motion and the top which is said to be precessing around vertical axis of Earth's gravitational field. Now ये प्रिसेशन मतलब क्या होता है? ये प्रिसेशन मतलब कि आपकी ये जो कुछ भी स्पिन होती है, किसके साथ में होती है? आपकी ये जो कुछ भी स्पिन का इंटरेक्शन होता है आपके अर्थ के ग्रेविटी, मतलब अर्थ के ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है, अर्थ के वर्टिकल एक्सिस के साथ में आपके न्यूक्लियस का ये जो कुछ भी मोशन होता है, जिसकी तरफ आपका ये न्यूक्लियाई मूव होते रहता है, इसको हम बोलते हैं प्रिसेशन. एंड ये जो कुछ भी अर्थ ग्रेविटी के डाउनवर्ड, मतलब अर्थ की जो कुछ भी ग्रेविटी होती है उसके डाउनवर्ड होता है, इसी को हम बोल सकते हैं गायरोस्कोपिक मोशन. क्या बोल सकते हैं हम इसको? गायरोस्कोपिक. ना, गायरोस्कोपिक मोशन मतलब क्या? तो आपका कोई भी स्पिनिंग न्यूक्लियाई जो होता है, ये स्पिनिंग न्यूक्लियाई जब भी मूव होता है, ये कब और कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. कहां पर? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट विथ द पेन. सी, अब ये देखिए, आपका एक न्यूक्लियर है जिसमें कि प्रोटॉन है, जिसमें कि क्या है? प्रोटॉन है. अब ये जो कुछ भी आपका प्रोटॉन है, पहले तो क्या होगा कि आपका ये जो कुछ भी न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर इज मूविंग, दिस न्यूक्लियर इज मूविंग, एंड ये न्यूक्लियर मूव होता है, एंड मूव होते हुए क्या होता है, ये जो आपका प्रोटॉन है, सपोज ये दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो अगर मूव हो रहा है तो क्या होगा? अब जब ये मूव हो रहा है, आपका ये कौन है? आपके न्यूक्लियर का प्रोटॉन. क्योंकि एनएमआर में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्रोटॉन की. एनएमआर में हम क्या लर्न करते हैं? प्रोटॉन की. एनएमआर में हम क्या लर्न करते हैं? प्रोटॉन के बारे में. मतलब क्या? ये प्रोटॉन इज मूविंग, एंड जब वो मूव करता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो कुछ भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है, फॉर एग्जांपल ये उसकी ऑर्बिट है घूमने के लिए, मतलब जो आपका प्रोटॉन मूव होते रहता है न्यूक्लियस में. अब वो प्रिसेशनल जो भी प्रिसेशन जो भी होता है, वो प्रिसेशन, दिस इज नथिंग बट द प्रिसेशनल ऑर्बिट, एंड ये जो
आपका न्यूक्लियाई ये मूव हो रहा है मतलब घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, एंड घूमते घूमते क्या होता है, slowing it is slowing down its motion, and whatever the motion of your nuclei is there, this motion can get like this, असा तो move होतो. And this is all about your proton which is processing in a magnetic field which is known as H0. What is that? H0. What is mean by H0? H0 is nothing but the your magnetic field. Okay, your magnetic field which is applied magnetic field. In this specific video we saw the precessional motion. What we saw? We saw the precessional motion of a nuclei. And then after, in next session we are going to learn what is mean by precessional frequency, what is the relation between our omega, gamma, H0, then what is mean by new value, or in another words you can say what is mean by the frequency, what are the terms which are involved in frequency. All those things we will be learning in our next session. Thank you so much for joining and watching this video.